Acha, let's start the meeting. Okay. Now I'm going to start the meeting and let's see who is joined. Maimuna Ali. Okay, now can you see the screen? How many of you can see the screen? Sir, I can. Okay, Faris. And what about Sir, I can Asif Shah? Okay, very good. And what about Saria? Saria, can you see the screen? Saria Zaid, I can't listen you. Saria, are you with us? Hello. Unmute yourself. Unmute first, Saria. Unmute. हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी, सारिया? Unmute करें अपने आप को. Okay, now let's start. This topic is of chapter number 7. I'm going to mute you all so that the background noise we can't hear and we are not disturbed. Okay. So I'm sure you all are listening me. Yes. Sir. Mohammad Hussain, you are listening me? Sir. जी बेटा बोलिए. Okay. Sir. जी बोलिए. Sir. Sir, Yes. ये नया chapter. Yes, it Sir, is ये a new नया chapter. chapter है. It is a new chapter and Sir, I'm number 10. okay. Okay. Yes, Hussain बोलिए. सो मैं कहना चाहता हूँ कि सारे असाइनमेंट जमा करने के कहाँ मतलब सारे असाइनमेंट जो आपको दिए हुए हैं ना Yes. कब जमा कराना है भाई वो जमा कराने के आखिर due date has expired, but you have a chance because of our continuation of class. So you must submit it today over the Google Classroom or email me. If you can't submit over the Google Classroom, some students are facing problem. So you may email me the sheets you are given, right? Okay, I am going to mute you all so that I can deliver the lecture. Okay? Okay, sir. Okay. Now, this is the chapter number 7 and the topic is number pattern. We have done this question before. It is just for the revision. Suppose I write 2 and then 3 and then 4 and I ask you to write the 2 next term. So definitely there is a difference between the two number is 1. So we add the next number so that at the previous one we add 1 so that we can get the next number. 2 is add 1 we get 3 and then 3 add 1 we get 4 and similarly when we add 1 to the 4 the previous term we get 5 here and similarly when we add 1 to the 5 it becomes 6. And one more example is that if I say it is 4 and the 6 and the 8, so what will be the next two term? Definitely there is a difference of the two number and the 2 number. So we add 2 to the previous one. So 8 becomes 10. The next term of the 8 is 10 and when we add 2 to the 10 it becomes 12. So 2 examples are given here. And the same questions are here for your question number 1 in your book page number 161. So try yourself. I'm going to take the question from you. So if anyone has any problem, you may ask the question and the other one can reply me what I say. And I'm going to unmute you. सर हमें समझ नहीं आया. सर हमें समझ नहीं आया. अच्छा अच्छा. सर ये मुझे समझ नहीं आया. अली सर फैसल. ये मुझे अली फैसल. अली फैसल. यस सर. यस सर. अच्छा मैं आपको I'm going to explain you again, right? Ali Faisal and the Asim Shah who do not understand, I'm going to do it again. Achha, suppose there 1 and the 2 and the 3. So what will be the next number? 4. 4. And one more, right? If I say, what will be the number? 5.
5. Good, good. Okay, now similarly, if there is a number 2 and the 4 and the 6, what will be the next number? 8. Sir, And, 8. and then 8. 10. so you got it. Now 10. open your book and the page number 161. You will find a question number 1 on basic level. There are number of parts from A to K. Try yourself. सर हम ये खुद ही कर लें. Yes, you do yourself, beta. It is very good if you do सर yourself. मुझे पहले का पता है. Yes, what is the answer of पहले the का 39 है. 39 is very good. Okay, let's all the students do it question quickly, so we will discuss it. Hussain, try it. 39 or Okay. 44. Hassan, try question number 2. Sir, 40. Asad Kareem. सर रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट? आज से अली फैसल बेटा शोर नहीं करो. आपको जो सवाल दिया है वो करो. रिजल्ट आपका जाएगा, आपको ईमेल कर दी जाएगी. ओके सर. कितनी हो रही है? सर पहले का 40 है. सर नहीं सर दूसरे का 40 है. ओके दूसरे का 40 है. एंड ट्राई अदर 32 है. सारे कर लो, उसके बाद बताना मुझे. या जब मैं पूछूंगा व्हेन आई आस्क देन रिप्लाई. लेट अदर ट्राई. सर ये सर थर्ड वाला 96 से डायरेक्ट 192 हो गया. थर्ड वन बेटा. यस which one? A, B, C. यस सर सी. Okay. Now, when we add the previous term, when we add the number, the same number to the previous one. Suppose 6 was there, and we add the same number 6, it becomes 12. 12 plus 12 ओके सर. 24 plus 24 become 48. Okay. ओके सर. Okay. Now do again. Saria, you are late comer. Why you are not joining Yeah. us? Saria, can you hear me? Your first class. सर हुआ कालिया. कालिया. समीत, आपने क्या सवाल किया यार? Samiit, what about the D1? Question 1, part D. Have you done this? Hussain, what was the answer of part A? सर पार्ट ए का. हाँ. सर पार्ट ए का 30. 39 and 39 and 44. very good. And what about the B, the part B? Sir 384 comma 784. Now, 40 and 32. 384. Asad Karim is giving the right answer. It is 40 and 32. Look at the question. It is 32. 40, 72. It is decreasing from 80 to 72. How many did it decrease? It decreased 8. सर वो मैंने सी का आंसर बता दिया. अच्छा, what about the C? C का क्या था? सर 384. सर 384. 784. 768. 768. 768. सर डी का 50 और 25. And what about D? सर 50 and 25. 50 and 25. सर 50 and 25. अच्छा, एक सेकेंड. अब्दुल्ला तारिक just a minute beta. Okay, what about D? What about D? सर 50 and 25. 25. And what about E? पापा की जॉब चले गई है.
समीर हाँ बेटा बताइए मुझे, व्हाट अबाउट आंसर ऑफ ई, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ई, व्हाट इज द आंसर? मैं खुद समझ नहीं आ रहा। समीर, मैं बताऊं सर, बहुत आसान है। अच्छा आसिम शाह, यू रिप्लाई, यस सर। व्हाट अबाउट पार्ट ई? सर ये 16 से अचानक 384 कैसे हो गया? अच्छा अच्छा, 16 से एक्चुअली 16 नहीं है, ये है 16384 है, 16 नहीं है। ओह सॉरी सर, सॉरी ये है। यार ये एक सेकेंड, डिलीट थोड़ा सा। सर ई का आंसर आएगा 44 सर, 44। अच्छा पहले मुझे बताओ हाउ यू हैव कैलकुलेट। सर ई का आंसर होगा 44। अच्छा आंसर तो होगा। अच्छा ये आपने निकाला कैसे, हाउ यू हैव रीच द आंसर? इट इज सर माइनस। क्योंकि हर जगह से 2000 और 200 माइनस हो रहा है, अच्छा तो चलो यहाँ से 20 माइनस कर देंगे, तो सर 44 एंड 24 आंसर आ रहा है। नहीं हुसैन आप बताइए। हाँ हाँ 44। अब बोलिए। 16 and minus 4। 60। 16 and minus 4। अच्छा अच्छा अभी आप मुझे 16 माइनस अच्छा मैं एक काम 384। करते हैं, अभी हम ई पार्ट को लेफ्ट कर देते हैं, अब हम चलते हैं एफ के ऊपर, ठीक है? एफ बताइए आप मुझे, एफ क्या होगा? 9 है, फिर उसके बाद माइनस 87 माइनस 94। अच्छा ये आसान है, हाउ यू हैव रीच दिस सर -288 नंबर से सर नंबर? 7 नंबर है गया माइनस 288 माइनस 2 88। Ali Faisal, have you got it? यस सर, यस Okay. सर। Okay. What about the next number is माइनस 50 माइनस 40। 576। अच्छा देखिए यहाँ पे एक प्लस नंबर है और एक माइनस नंबर है। द फर्स्ट नंबर इज द प्लस एंड द सेकंड नंबर इज द डबल ऑफ विद द माइनस साइन। First was the plus and the second was minus and the third was also plus, but it is double of the previous number. So 9 multiplied by 2 is 18, but it is minus 18. 18 multiplied by 2 is 36, but it is plus because the previous was minus. Similarly, 36 multiplied by 2 is 72 and 36 was plus, so it is minus. And 72 multiplied by 2 is 144. 72 multiplied by 2 is 2 to the 4, 7 to the 40. So 144 and the sign is plus here. Similarly, 144 multiplied by 2, 2 for the 8, 2 for the 8 and 2 1 the 2. So it is 288 but with the sign of minus. Similarly, 288 multiplied by 2, so 2 8 is 16. 1 is carried, 2 8 is 16 and 1 17. And then 1 is carried, 2 to the 4 and 1 5, 576. But the sign is plus. Now move to part G. Minus सर 52, पहले minus सर 87 minus 87 94. सर 87 minus Sir, 87, minus 87 minus 94. minus 70. Asad Kareem, you are there? Okay. And Abdullah Beg has joined or सर not? मुझे जी वाला समझ नहीं आया। अच्छा बेटा G Sir, में minus 94 है. अच्छा minus 94 है। सर हमारा connection क्या है? अच्छा अभी check करो हुसैन। -81 और 94 है। अच्छा हुसैन, let's check it. समझ आ गई, समझ आ गई। समझ आ गया because there is a सर उन्हें खुद को difference लगता है। of 7 number. So we just add -7 to the previous figure. Similarly, part H is -100. सर Sir, 50 minus 40 50 minus 40. सर 50 40 Very good. सर जी का 80 के बाद क्या है? जी का 80 के बाद क्या है? G Sir, का 50, 80 बाद है -87 and -96. सर जी का 80 के बाद क्या है? 80 के बाद है, it is 87. सर अभी को कहें थोड़ा हल्का बोले। actually you left and you join again. That is why you are creating problem. Okay, Ali Faisal got it. Ali Faisal got it. यस सर। सर आई का 50 एंड 60 है। अच्छा I का जो है 50 and 60. Everyone is clear? यस Yes, sir. अच्छा okay. Now what about J?
Sir, 79, 79 and 86. 79, 86. 86. Very good. And what about the last one? The K? 4. Board. ये 80 होगा सर 80 होगा ये सर 216, सर 216, सर जे 80 होगा सर 216, Ajay, what? 4, 4 threes are? 216, When we multiply 4 by 3, it becomes? 4 3 are 12. And 12. 12 threes are? 12 threes are? 36. And when we 36 multiply by 3, जी बेटा बोलिए. Sir, 108. 324. Okay. 324. Okay, let's check. Asad Karim, let's wait and we check it. 3 6 are 18, सर 324, 3 are 9 and 110. So it becomes 108. 324 सर असद करीम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा है। Doesn't matter, आप भी कर लें. तो आप भी कर रहे हो। Doesn't matter, कोई मसला नहीं है. आपको टेबल असल में 36 का टेबल जो है it is quite hard to read. So you just सब multiply. समझ आया। So 36 अलग की and लोगों के हम शामिल हैं। 36 multiplied by 3, it becomes 108, and 108 multiplied by 3, 3 8s are 3 8s are 324 sir very good. और And we have 972 And what about the one more term? 3 4s are 12. One is carry. 972 Sir, 972. 972. 972, Okay. Very good. अच्छा, ये आपको करके होगा क्लासरूम पे भेजना था। नहीं बेटा, मुझे ग्लूकोज आप नहीं भेजिएगा, ये आप मुझे भेज दीजिएगा. You just send it me to just email me. Oh, okay, I will just upload it to the Google Classroom, so you can reply me over the. सर आपका ईमेल एड्रेस बताएं आप। अच्छा, मुझे अली सर फैसल सर अली को कहे थोड़ा हल्का बोले। अली इसको बोलना बहुत मुश्किल है. अच्छा अली, listen everyone. You have to submit it. सर अली को बोले थोड़ा आराम से बोले You have to submit it in Google Class. मालूम बोला नहीं। Right? Google Classroom. asadahmad@live.com, right? Submit Google Classroom or email asadahmad@live.com. Acha, now we are moving question number 2, the last one. Write down the next two term of the sequence or the following sequence. What is the answer? 915 Okay, minus 6. Sir, 913. Oh, 9. 915 9 or 15 9 and 15. 15 what about Ali Faisal? Is it right? yes sir Okay, what about the B? Saria Zaid, are you listening me? 12 and 8 Saria Zaid, Sir, 28. 28 and 12 and 8 12 and 8 okay, 12 and 8 is the correct answer, because 47 minus 9 is 38, and then minus 8, and then minus 7, then minus 6, and the 33. minus 5, and the minus 4. So decreasing each number from 9. Okay, now minus 50, minus 40. Yeah, look, solve it. Everyone got it? The part B. Yes, sir. सर 33, And what about the सर C? सी का 33 है। C का 33 and सर 33 and 32। 32. Very good. And two participants raised the hand. Mohammad Hussain, you have raised the hand. नो सर वो गलती से हो गया। अच्छा. What मैंने कहा about था part? बाबा सवाल पूछेंगे इसकी। What about ये part लो, D? What about part D? Sir, Samir? Yeah. Sir, 88 सर 88, 88 and and 85. 85, very good, very good. And what about E part E? 18 सर 16, Sir, सर Yes. 16, 21. 16, sir Sir, 21. Actually, it is 21. Actually, it is 21 because okay. Now the difference between the two number is 2. Okay. Yes, 2 sir. and then 3
and then 4, then 5, and then 6, and then 7. So it becomes 21 and 28. 28. Okay, समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. एक बार रुक जाए। हाँ yes. टीचर मेरी भी सिर्फ ना कोविड वाली जो है मुझसे वो वाला असाइनमेंट नहीं है, बाकी पिछले सारे मैंने सबमिट करवाए हैं। Okay, now ये किसके असाइनमेंट की बात कर रहा है? it is all about this two questions. I'm going to take attendance from all of you. How many have there? How many have there? 30 students are Boleh there. raw bas. Para mas que mobile recorta usa raw bas. Você vê que raw bas. Mama ra khorda focar. Maria मेरा बच्चे हैं क्लास में। Okay, got it. Didi beke. बच्चे हैं हो क्लास गया में। ये? हो गया ये? Copy कर लिया? Everyone has copied it? Okay, now I'm going to take attendance from all of you so that you can see how many present you have, how many you have presented. So नाराजी रहा तक 5 मिनट पढ़ाई क्लास वार तुम्हारे सर स्क्रीनशॉट ले ले। no, I'm just going to ask some question from you. Just wait, beta. Okay, quick question. You have any question? नो सर। नो सर। अच्छा, मैं अभी मैनुअल स्टूडेंट हूँ because I'm facing some problem here. So doesn't matter. सर Yes. सर आप बता दें कब आएंगे सर रिजल्ट हम? Beta, result की date अभी still not announced. So you have given the email. सर क्लासेस कब हुआ था? यस सर। अच्छा, जुलाई की 28 आप जुलाई को आएगा। you all have submitted your email to the class teacher. सर Yes. सर कब क्लासेस कब खत्म होंगी? 10 जुलाई को सर कर देंगे सर, सबमिट तो कर नौ देंगे। 9 जुलाई को। अच्छा, जस्ट अ मिनट, आप अरे बोलिएगा अंके बैठो यार। आप 3 मिनट 9 जुलाई को 9 जुलाई को। अच्छा अच्छा, ये बताइए तुमने अपनी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। आवाज सेव करा हुआ है। अच्छा, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। Mariam está class Rapporta sir. Do not leave, बेटा। I'm getting your attendance, so आप leave नहीं कीजिएगा बेशक, सही, right? मोहम्मद बिन शाहिद, you come late. मोहम्मद बिन शाहिद, अब्दुल रहमान, and Abdullah Tariq, and Ali Faisal, Asad Karim, and Asim Shah, Faris, and Hamza Beg, who is Saeed Ali Khan, Muhammad Hussain, Sadia, and Saim. Okay, I'm going to unmute you. Okay, now tell me. सर हम शुरू से हमारा नेट चला गया था। Okay. ये who is Saeed Ali Khan? समीर सर समीर है समीर। समीर। Ubum manila. यार हुसैन। Yes sir. बेटा जब भी आप लॉगिन होगा ना, पीछे किसी आवाज नहीं आ चाहिए, आपके वहां से शोर बहुत आता है, ठीक है? सर ये पता नहीं कौन पठान बोल रहा है। आप अली फैसल, behave yourself. अच्छा, सबके अटेंडेंस हो गई? Is there anyone who left? नो सर। हमजा बेग, यस सर। बेटा आपकी आवाज नहीं आई मुझे आज क्लास में। Why you didn't participate? नहीं टीचर। सर हम थे क्लास में सर। आपको समझ में आया? सर हम शुरू से थे।
अच्छा, हम शुरू से थे। okay, I'm going to upload this classwork to the Google Classroom. You all submit, you all do this same worksheet and the same work and submit it to the Google Classroom so that you can get your result. A good result. If you want to have a good result, you must submit all the work to the Google Classroom. If it is empty, your name or your name does not appear, I cannot give you any extra number, right? ओके सर। So try to do it today. ओके सर, Because you अल्लाह are हाफिज। your result is going to be prepared, right? Okay, beta, I'm going to stop it. सर हाउस माय रिजल्ट। Still, if there is any question, you may ask me. Yes, who is there? सर हमने तो सारा काम जमा करवाया मैथ Yes, का। yes. मैथ का। Everyone who has done doesn't matter. But I have not received number of students did not submit the right, like Sadia and Samit, and number of students didn't submit, right? The name is there. You can email me and you can submit Google Classroom so I can get the record. Okay, but I'm going to end the meeting for you. You can take your next one. काम भेज देगा। Okay, Allah Hafiz. सर काम भेज देगा। Yes, I'm going to काम submit. भेज देगा। अल्लाह हाफिज सर। Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah.